children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about multiplications. So let's start with that. Multiplications as repeated additions. Suppose there are three groups of two boys each beta. Like that one, two boys and two boys. How many boys are there in all? Clearly 6. So 2 plus 2 plus 2 हमारे कितने होते हैं? 6. Thus 2 taken 3 times makes 6. We write it as 2 into 3 is equal to 6. We say 2 multiply by 3. अगर हम 2 को 3 के साथ multiply करेंगे then we get 6 beta. So 2 into 3 that is equal to 6 is a multiplications fact. Hope you understood well. So now take 4 groups of 3 gifts each. Like 3 gifts हैं, ये भी 3 है, this is 3 and this is also 3. So how many gifts are there in all? कितने gifts हो गए? Clearly 12. कैसे? 3, 3, 3, 3. Now add all the 3 plus 3 plus 3 हमारे कितने होते हैं? Yes, 12. Thus 3 taken 4 times makes 12. So we write as 3 into 4 हमारे हो गए 12. So we say that 3 multiply by 4 gives 12 और 3 into 4 होते हैं हमारे 12 is a multiplications fact of that one. Hope you understood well. So now move on next. Texting time 7.1. So here it is given question number 1. Write the multiplications fact for each of the following. ये कितने हमारे? Yes, 1 and how many groups are there? 1, 2, 3. So हमारा आंसर क्या बन गया बेटा? 1 3 is 3. Hope you understood. So now move on next topic which is multiplications tables from 2 to 10. We have already learnt the multiplications tables from 2 to 10 in a class second. So let's review these tables again beta. So this is a table of 2, 3, ये table 4 की है, 5 की, 6 की. Okay, after that table 7, 8, 9 and 10 you just read it and practice it, okay, and learn it too. So now just move on. Texting time 7.2. Question number 1. Filling the missing numerals. So here it is given 2 8. So 2 8s are कितने होते हैं हमारे? Yes, 2 8s are is 16. So write it 16. So now move on B part beta. Complete the grid by multiplying the numbers. So here it is given 1 को multiply करेंगे 1 से तो 1 1 is 1, then 1 multiply 2 is 1 2 is 2, then 1 3 is 3, 1 4 is 4, then this is 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10. I hope you understood well. So now move on next topic which is multiplications of a 2-digit numbers by a 1-digit number. So, example is given here, multiply 13 by 3. So, for that we just see the explanations first. So, we proceed as follows. Step number 1, arrange the number in a column form as shown below. So, now आपको क्या करना है step number 2 पे multiply 3 ones by 3. Okay, पहले 3 को 3 से करोगे आप. So, 3 3 से कितने होते हैं? 9. So, we just write it 9 ones over there. Now multiply 1 tens by 3. So 1 10 को 3 से multiply करोगे. So कितना आएगा हमारा? Yes, 3. So answer is 39. Hope you understood well. Now beta move on. Texting time 7.3. So here it is multiply 21 into 2. So start with ones place. So 2 ones are कितने होते हैं हमारे? 2 and 2 twos are 4. So this is how we just do the multiply. Now just see the next topic which is multiplications with carrying now. Okay, so now example number 1 is given here. Multiply 23 by 4. So for that just see the explanations. We proceed stepwise as follows. Step number 1, write the numbers in a column form first. Like that way. Step number 2, multiplying ones. अब ones को multiply करना है. So 3 ones into 4. 3 4s कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं. So 12 कैसे लिखते हैं? 110 plus 2 ones. Okay. So after that, write 2 under 1's column and carry over 1 to 10's column. So now step number 3, multiplying tens.
2 10s into 4 हमारे होते हैं, yes 8 10s. So now 8 10s plus 1 10, that means carried over हमारा बना 9. So now write 9 under the tens column. So here it is 23 into 4 हमारे कितना निकल के आया आंसर 92. Hope you understood well. Similarly बेटा explanations example 2. एग्जाम्पल 2 में हम क्या करेंगे 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मेथड आर सेम. पहले यू जस्ट स्टार्ट विद द वंस प्लेस देन टेंस प्लेस एंड थ्रू दिस योर आंसर इज 240 like that way. Now just see the next. This is texting time 7.4. First one is multiply. So start with ones place. 5 5s are 25. 25 का 5 carry 2. So we just write it 2. 5 2s are 10 and 10 and 2 become 12. Okay, so it's a 125. Now there are other examples. You have to complete it your own. Okay beta. So now just see the next topic, which is multiplications tables from 11 to 20. Now this is a table of 11. 11 ones are 11. 11 twos are 22. 11 threes are 33 and so on. This is a table of 12, 13, 14, 15 and till 20 beta. So just do practice, revise it and learn it also. Okay. So now just move on next. This is texting time 7.5. Here it is given filling the blanks. So now we know the table. So 12 fours are कितने होते हैं हमारे? So yes, 12 fours is 48. Okay. So these are the other examples. Just fill it yourselves. Now just see B part. Look at the pattern and complete them. 5, then उसके बाद 10, then 15. So gap कितने का है इसमें? Clearly 5 का. So 5, then 10, then 15, then after that बेटा 20. 20 में 5 ऐड करेंगे. Yes, 25. Then 30, then 35. So this is called pattern. Hope you understood well. Now C part. Complete the grid by multiplying the numbers in the uppermost row with the numbers in the leftmost column. Here it is given 1 को multiply करेंगे 11 से. So कितना आया हमारा 11. Similarly 1 को 12 से करेंगे और you can say that 12 को 1 से करेंगे. So 12. This is 13 ones are 13, 14 ones are 14, 15 ones are 15 and so on beta. This is how you have to fill that columns. Hope you understood well. So now see the next one. Multiplications of 3-digit numbers. So here it is given. In a multiplication sums A part, the number to be multiplied is called the multiplicand. The number by which we multiply is called the multiplier and the result of multiplications is called the product. Thus in 6 into 5 is equal to 30. We have multiplicand कितना है 6, multiplier कितना है given 5 and product जो होगा ये उसका होगा 30. Hope you understood well. Now just see the multiplications by 1-digit number without carrying. Example number 1. Here it is given multiply 312 by 3. So for that just see the explanations. Step number 1. Multiply 2 ones by 3. Okay. So 2 ones को 3 से multiply करेंगे. It is 6 ones. So write it 6 here like that. Write 6 under ones column. Now step number 2. Multiply 110 by 3. So we get it 3 tens. So write 3 under tens columns. After that multiply 3 hundreds by 3. So 3 hundreds को हम 3 से multiply करेंगे. So we get it 9. अब हम 9 को कहाँ करेंगे 100 की प्लेस पे लिख देंगे. So the answer is 936 beta. Hope you understood the steps all. Now move on next one. This is multiplications by 1-digit number with carrying. Now example 2. Multiply 486 by 7. So explanations we proceed as follows. Step number 1. हम क्या करेंगे step number 1 पर मल्टीप्लाई 6 ones by 7. सो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 42. 42 का मतलब क्या होता है 4 tens और 2 ones. सो राइट 2 under ones column and carry over 4 tens. Okay, like that way.
After that, step number 2, multiply 8 tens by 7, so बना हमारा 56. So अब हम क्या करेंगे, 56 में हम 4 10 ऐड करेंगे, इट बिकम 60, और 60 के लिए हम क्या करेंगे, 0 10 लिखेंगे एंड 6 हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. नाउ स्टेप नंबर 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 7 को, दैट मीन्स इट्स 28, और 28 में 600 जो कि कैरिड था ऐड करेंगे, सो इट बिकम्स 34. सो वी कैन से दैट 486 into 7, that becomes 3402. Hope you understood all concepts very nicely. Now move on, texting time 7.6. Here it is given, multiply 304 with 5. So start with ones place first. 5 4 से कितने होते हैं, 20. 20 का 0 2. ओके, हम कैरी 2 कर देंगे एंड 5 0 is 0 बट 2 हमारा नीचे आ जाएगा. देन 5 3 is 15. So 1520 is the answer. So there are the other examples beta, you have to complete it your own. Okay, so now just see the next topic. This is multiplications by 10, 100 and thousands. Example number 1 first. Multiply 923 by 10. Record your observations. So 923 को 10 से multiply कैसे करेंगे? Yes, 923 into 110, that means 923 10 के लिए हमने उसमें एक 0 ऐड कर दिया, सो इट बिकम्स 9230. Observations. We get the product 923 into 10 by putting 1 0 to the right to 923. हमने एक 0 ही ऐड करा ना उसमें, सो दैट्स वी हैव 923 into 10, कितना बन गया हमारा? Yes, it's a 9230. ओके, सिमिलरली 123 में 10 ऐड करेंगे, सो हम जस्ट एक 0 ऐड कर देंगे, सो इट बिकम 1230. 528 में हम 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक 0 ऐड करने पे ये हमारा नंबर बनेगा 5280. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल 2. मल्टीप्लाई 78 बाय 100. अब 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? यस, 100 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 100 फर्स्ट. सो 78 हंड्रेड्स कितना होता है? 7800. सो ऑब्जर्वेशंस क्या है इसमें? हमारा जो आंसर होगा, वी जस्ट पुट 2 0 एट द राइट ऑफ दैट वन. ओके, सो हमारा आंसर बना येस 4 into 100 400. 15 को 100 से करेंगे 1500. 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3600. वी हैव टू पुट 2 0 एट द राइट साइड. ओके, एग्जाम्पल 3. मल्टीप्लाई 5 बाई 1000. अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए वी जस्ट नीड टू पुट 3 0. अब हमने 3 0 ऐड कर दिया, ये बन गया हमारा 5000. सिमिलरली 4 में आपने 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो पुट 3 0. 4 1 is 4 and add 3 0, it becomes 4000. Okay, so now carefully read the above observations and what do you conclude? Conclusion means to multiply a given number by 10, 100 or 1000, we put 1 or 2 or 3 zeros respectively to the right of the multiplicand and we get the product. Hope you understood well beta. So now just see the multiplications by 20, 30, 40 and so on till 90. So how to solve it? Let's see example number 4. फाइंड द प्रोडक्ट. अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है 18 into 20 का, सो 18 into 20 मीन्स 20 के लिए मतलब हम करेंगे 210. सो 210 मीन्स 18 2 is 36. नाउ पुट 1 0, सो इट बिकम्स 360. ओके, सो बी पार्ट इज 19 into 30. सो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारा है 57. सो 57 में हमने एक 0 ऐड करा, इट बिकम्स 570. Conclusion, to multiply a given number by 20, 30, 40 until 90, we multiply the given number. Okay, like 2 given है, इसमें 3 given है, 4 and so on respectively and put a 0 to the right to the product beta. Okay, so now just see the next one which is multiplications by 200, 300 and so on. Example number 5. Here it is given, find the products. 56 को 200 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ सॉल्यूशंस.
We have 56 into 200. That means we have to multiply that number with 200s. So 56 into 200 हमारे कितने बन गए? Yes, 100, 1200. So now just put 2 zeros. So it becomes 11,200 beta. Hope you understood well. So now B part, that is 35 into 300. So for that, first you multiply 35 with 3. So you just get 105. Now put 2 zero. So it becomes 10,500. Hope you understood well beta. Now conclusion. To multiply a given number by 200, 300, 400 and so on till 900, we multiply the given number by 2, 3, 4 and so on respectively and put 2 zeros to the right of the product beta. Okay. So now see the next one, which is texting time 7.7. Find the product. So 46 को 10 से multiply हम कैसे करेंगे? Yes, 46 ones are 46 and put 1 zero at that side. Hope you understood. Similarly, 125 को 10 से करना है and so on. There are other examples. You have to complete it your own. Now, just see the next topic. This is properties of multiplication. So here it is, order property first. We may multiply two numbers in either order. The product remain the same. This is known as order property of multiplications of numbers. For example, 2 into 6 कितने होते हैं हमारे? 12. And if we just reverse that number, 6 into 2 is also 12. Therefore, 6 into 12 हमारे is equal to होते हैं 6 into 2 के. Hope you understood. Similarly, 5 को 4 से करोगे 20 या 4 को 5 से करोगे 20, ये दोनों ही टर्म्स हमारी सेम होती है. This is called order property of multiplications. Now see the next one. This is grouping property. So the product of three numbers remains the same even when the grouping of the number is changed. For example, 6 into 2 into 5 हमारे is equal to होंगे. Yes, 12 into 5 हमारे 60 होते हैं, तो 6 into 2 into 5, 6 into 10 is equal to 60. That means हम क्या करेंगे? This value is equal to that value. This is called the grouping property कि किसी भी numbers को हम interchange कर रहे हैं, उसके positions को change कर रहे हैं, but answer हमारा same ही रहता है. I hope you understood. Now 3. Multiplicative property of 1. The product of any number and 1 is the number itself. Clearly, if just multiply 9 into 1, answer is 9. And 12 को 1 से multiply करेंगे, so answer is 12 beta. Okay, so now just see the example. Find the products. 926 into 1 हमारा क्या बना? 926 itself. 725 को 1 से multiply करने पे हमें answer मिलेगा 725 itself. This is called the multiplicative property of 1. Okay, so now just see the one more property. This is called multiplicative property of 0. The product of any number and 0 is 0. Clearly 8 को 0 के साथ multiply करेंगे तो 0, 15 into 0 is 0. किसी भी number को 0 के साथ multiply करने पे answer is always 0. Hope you understood well the 0 property. Now move on next property. This is distributive property of multiplications over addition. So let's see that. Consider 3 into 5 plus 2. And 3 into 5 plus 3 into 2. So हमें क्या करना है? 3 into 5 plus 2 हमारा equal होता है is equal to 3 into 7 is equal to 21. And 3 into 5 plus 3 into 2 is equal to 15 plus 6 is equal to 21 beta. So therefore we can say that 3 into 5 plus 2 is equal to 3 into 5 plus 3 into 2. ये जो हमारा नंबर है 3 को हम पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले 5 plus 2 7 करके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर विल बी सेम. होप यू अंडरस्टूड. सिमिलरली ये एग्जाम्पल है आपके. जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ दैट वन बेटा. नाउ मूव ऑन. टेक्सटिंग टाइम 7.1. Here it is given without actual multiplications fill in the following blanks. अब हमें multiply नहीं करना है, but we have to fill the blanks too. So this is equal to sign, that means 25 into what number is equal to 25 in 12 into 25. So 25 हमारा common number है. So we need to 12 here to just make it
equal. So 25 into 12 is equal to 12 into 25. Okay. So these are the other examples. You have to complete it your own. Okay. So now just move on next one, which is word problems. Example number 1. 4 sweets were given to each boy in a group of 8 boys. How many sweets were distributed in all? So solutions. Number of sweets कितनी दी गई एक बच्चे को? 4. And number of sweets given to 8 boys. So 8 boys को कितनी दी जाएगी? Yes, 32 sweets were distributed. We just multiply both the number. Okay. So now example 2. The cost of a one chocolate is 8. एक चॉकलेट की कॉस्ट 8 रुपीज़ की है. Now find the cost of 10 such chocolate. पर लेकिन अगर 10 चॉकलेट्स खरीदनी होगी तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? Multiply both the number and answer is 80. Now just see the example number 3 also. A box can hold 7 pens. एक बॉक्स में 7 पेन्स आते हैं. So how many pens can 4 boxes hold? तो 4 बॉक्सेस में कितने आएंगे? एक में 7, एक और में 7, फिर 7, 7. So this is a multiplication sums. So कितने आएंगे? 7 4s are 28. Now example 4. A car travels a distance of 60 kilometer in 1 hour. एक घंटे में कितना ट्रैवल करती है? 60 किलोमीटर. So how many kilometer will it cover in a 7 hour? So 7 hour में कितना कवर करेगी वो डिस्टेंस? Easy questions बेटा. 1 hour में 60, second hour में 1 more 60, then 1 more 60. How many times? 7 times. So 60 into 7 कितना होता है? 420 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी. Now example 5. In a grove there are 24 trees in each row. If there are in a 80 rows of trees, then how many trees are there in a grove? So एक रो में 24 है, so 80 rows में कितनी हो जाएगी? Simply just multiply both the number and answer is total number of trees कितने हो जाएंगे? 1920. Hope you understood all example very nicely. Now move on texting time 7.9. Here it is given, solve the following word problems. One question is, the cost of a ball pen is 20. एक बॉल पेन कितने का आता है? 20 का. So what is the cost of 9 such ball pens? So 9 pens कितने के आएंगे? So it's a clearly 92 से कितने होते हैं हमारे? 180. Okay. So ये हमारे आएंगे 180 रुपीज़ की. This is rupees sign. 9 zeros are 0 and 9 twos are 18. Hope you understood well beta. So these are the other questions. You have to complete it your own. Okay. So now move on next topic, which is multiplications by a 2-digit numbers. We use the distributive property of multiplications to solve this type of problems. The following examples will make it clear. Okay. Example number 1. इसमें क्या given है? Multiply 56 by 37. So हम क्या करेंगे? Distributive property लगाएंगे. So 56 को पहले हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, एंड सॉल्यूशंस के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2072. ओके. और अगर हम शॉर्ट मेथड में करते हैं दूसरे तरीके से तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर इज सेम. नाउ एग्जाम्पल 2. मल्टीप्लाइंग 256 by 27. So here it is a distributive property. So 20 plus 7 makes number 27. So हम क्या करेंगे? 256 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, then same number 256 multiply by 7. So we get the answer 6912. And if we just take it a short method, तो अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा सेम बेटा. I hope you understood examples very nicely. So now move on, texting time 7.10. First one is multiply. So here it is given, first one 28 multiply by 27. 7 8s are 56, 5 carry, 7 2s are 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19. मल्टीप्लाई 2 8s are 16, कैरी 1, 2 2s are 4 और एक 5. सो ये हमारा कितना बन गया? 6. 9 और 6 हमारे कितने होते हैं? 15 का 5, कैरी 1, 5 6 और एक 7. सो 756 इज द आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ बेटा मूव ऑन नेक्स्ट, विच इज वर्ड प्रॉब्लम्स.
एग्जाम्पल नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ डायरी इज़ 25. एक डायरी की कॉस्ट हमारी 25 रुपीज़ है. देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 सच डायरीज़. तो ऐसे ही 15 और डायरीज़ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक की 25, एक और की 25, देन अगेन 25. सो जब हमारा सेम कॉस्ट आ रही है, सो वी जस्ट डू द मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स एंड आंसर इज द कॉस्ट ऑफ 15 डायरीज 375. होप यू अंडरस्टूड. नाउ एग्जाम्पल 2. अ बस रन्स अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में 45 किलोमीटर चलती है. देन हाउ फार विल इट गो इन अ 24 आवर्स. तो 24 आवर्स में वो कितना रन करेगी, कितना स्पीड कवर करेगी. सो येस, मल्टीप्लाई बोथ द नंबर. सो द बस विल गो येस 1080 किलोमीटर इन अ 24 आवर्स बेटा. ओके, सो नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट वन, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3. At a fun park, 25 children paid 35 rupees each at the entrance. 25 बच्चे, हर बच्चा 35 रुपीज़ एंट्रेंस का दे रहा है. सो हाउ मच मनी हैज़ पेड एट द एंट्रेंस. सो कितना टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 25 बच्चों को. जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द नंबर. सो टोटल अमाउंट पेड बाय 25 चिल्ड्रन वॉज 8875 बेटा. ओके, क्योंकि एक हमारा 35, देन वन मोर 35, देन वन मोर 35. सो जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द नंबर एंड आंसर इज 875 रुपीज़. एग्जाम्पल 4. अ बैग ऑफ शुगर वेट इज़ 50 kg. एक शुगर का बैग है जिसका वेट कितना है, 50 kg गिवन है. सो व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 456 बैग्स ऑफ शुगर बेटा. तो अगर ऐसे ही हमारे और शुगर के बैग आ जाते हैं तो उसका वेट कितना होगा, ये शुगर है. So we just do the multiply both the numbers. So hence we can say that the total weight of 456 bag is 22,800 kg beta. I hope you understood well. So now move on, texting time 7.11. Here it is given a packet contains 176 buttons. एक पैकेट में कितना buttons आते हैं, 176. How many buttons are there in a 85 such packets? सो ऐसे ही 85 अगर और पैकेट्स होंगे तो उसमें कितने बटन्स आएंगे, लेट्स सी. सो फॉर दैट वी जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द वैल्यू. सो राइट इट 176 85. ओके, 176 को हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 5 30 का 0 कैरी 3, 7 5 35, 35 36, 37 38 का 8 कैरी 3, 5 1 5, 6 7 and 8. मल्टीप्लाई 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 7 56, 56 57 58 59 60 का 0 कैरी 6, 8 1 8, 8 1 8 और 6 कितने होते हैं, 9 10 11 12 13 14. सो राइट इट 14 ओवर हेयर. नाउ एड इट 0 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 8 और 1 9 एंड 14 का 14. सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट वन. सो कितने बटन्स आए हमारे, येस ये हमारे बटन निकले 14,960. I hope you understood well. So this is the answer. So beta, with this we ended the chapter. I hope you understood well. So you only need to do practice beta. Do practice and do rest of these exercises by your own.